નમસ્કાર, સમાચારોમાં હું છું આપની સાથે હિરલ મહેતા। હજી પણ 3 દિવસ સુધી રાજ્યમાં રહેશે ગરમીનો પ્રકોપ। આજે કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને સુરતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। બપોરના સમયે બહાર ન નીકળવા હવામાન વિભાગે સલાહ આપી છે। તો બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં પણ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। વડોદરા અને રાજકોટમાં પણ પ્રચંડ ગરમી પડશે। તો અમરેલી, બોટાદ, દ્વારકામાં પણ યલો એલર્ટ અપાયું છે। 41 થી 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન રહેવાનું અનુમાન છે। મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 2 થી 3 ડિગ્રી ઊંચું નોંધાશે। રાજ્યવાસીઓ હાલ ભીષણ ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના ઉપર સતત હવામાન વિભાગ નજર રાખી રહ્યું છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ ગુજરાતના ડિરેક્ટર AK दास सर अपनी साथ थे, सीधा તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, गर्मी बहुत हो रहा है और हवामान के हिसाब से आज और आपके हिसाब से क्या अनुमान हाल लगाया जा रहा है? आज हम लोग ऑरेंज वार्निंग के साथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ दोनों रीजन में वार्निंग दिया है। इसमें ऑरेंज वार्निंग में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कच्छ और सुरेंद्रनगर को दिया गया है सौराष्ट्र कच्छ में, और जो गुजरात रीजन है सूरत के लिए आज ऑरेंज वार्निंग दिए है। और बाकी जो येलो वार्निंग में जो डिस्ट्रिक्ट है, आप देख रहे हैं इधर देवभूमि द्वारका है सौराष्ट्र कच्छ में, राजकोट है, आपका अमरेली है, बोटाद है, अहमदाबाद गुजरात रीजन में अहमदाबाद है, गांधीनगर है, इधर बनासकांठा, पाटन है, बड़ौदा है, और सूरत को तो बोल ही दिया, ऑरेंज वार्निंग दिया गया है। ऐसा स्थिति अगले 3 दिन तक बने रहेगी। सूरत में हम कल से हीट वेव वार्निंग विथड्रॉ कर रहे हैं, नहीं रहने का स्थिति होएगा। और इस सर, मौसम विभाग जिस तरह से काम करता है उस हिसाब से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी जो भी वार्निंग इश्यू करता है, आपके हिसाब से लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए अभी इस सिचुएशन में आपको जो दोपहर के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, 4 बजे तक तो नहीं निकलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हीट एक्सपोजर ना आ जाए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और इनकेस बाहर निकलना पड़े आपको अम्ब्रेला या कैप यूज करना चाहिए, और लस्सी और इस टाइप का जो लिक्विड और इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाना चाहिए। धन्यवाद सर, TV9 के साथ बातचीत करने लिए। तो आ હતા હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર, जो સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે અત્યારે જે પ્રકારની સ્થિતિ છે, બપોરે શક્ય હોય તેટલું સીધા તડકામાં જવાથી બચવું જોઈએ, અને જો જરૂરી હોય બહાર જવું તો છત્રી અથવા તો ઠંડા પીણા છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને આ પ્રકારે ગરમીથી બચી શકાય છે। કેમેરા પર્સન નટવર પરમાર સાથે રોનક વર્મા, TV9 અમદાવાદ।